Now let me show you just a little bit about this woman who penetrated the Indian Administrative Service, defrauded the entire system, and actually possessed a non-creamy layer OBC certificate. Imagine holding a certificate like that. Well, this is that Puja Khedkar. How creamy is Puja Khedkar? She owns 5 plots, 2 apartments across Maharashtra. She has land worth nearly 22 crore rupees spread over 22 plus acres. This is all there in affidavits. She owns 2 plots of land in Pune's Mahal Longe Dhadawali area. 20 crore rupees is the value of that. The Khedkars have plots in a place called Ahmednagar in Maharashtra costing about 1.25 crore rupees. Flats in Ahmednagar costing about 1.2 crore rupees in total. Annual income from properties about 42 lakh rupees. They own luxury cars, including an Audi. Father's assets is estimated at about 40 crore rupees. Claimed an OBC non-creamy layer certificate under the 8L rule. This is the person that we are dealing with. This is the person whose non-creamy layer OBC certificate, which has allowed her to amass all of this wealth already, has now been cancelled. Let's get a word from the real world. The real world means the people who occupy the space in which Puja Khedkar sought to manipulate things and has now signaled to the entire country and the world that she is capable of going scot-free. Vijay Kumbar is a right to information and social justice activist. He did much of the work that exposed Puja Khedkar last year. Ritik Saw is a UPSC aspirant. Shekhar Dutt is founder of Sleepy Classes IAS and a commentator on the entire system that may have come together to protect someone like Puja Khedkar and perhaps others. Vijay Kumbar, I would like to come to you first. Non-creamy layer caste certificate of Puja Khedkar being cancelled. Does this mean anything, sir, to you? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए इतना टाइम लगा, ये बात अलग है। इसके बाद उसने भी उसके लिए अपील किया है अभी, और ये अपील की सुनवाई के लिए उन्होंने और 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आज बहुत कुछ उस पर स्टडी किया, लेकिन ये अपील आता कहाँ से? डिविजनल कमिश्नर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द एनसीएल सर्टिफिकेट इज वैलिड और नॉट. इट इज ऑब्टेन्ड बाय providing original doctors or what. But he has cancelled it. लेकिन उसके बावजूद उसने अपील की दरख्वास्त की है, और कौन अपील सुनने वाला है? डिविजनल कमिश्नर के आगे कोई ये नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो कहाँ से अपील की प्रोविजन है? तो इसका मतलब ये है कि ये लड़की अभी भी सारी जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता है उसके पिताजी की वजह से, उस सब का बिल्कुल बेकायदा क्या बोलते हैं उसे, बहुत ही गलत तरीके से वो इस्तेमाल कर रही है। और ये इसलिए हो रहा है कि सारी सिस्टम उसके पीछे है। अभी उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देखिए, जिस पर जिन्होंने दिया वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको पता है अगर इसको कुछ करना है तो उनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए यूपीएससी जिम्मेदार है, महाराष्ट्र के डॉक्टर जिम्मेदार है। महाराष्ट्र की जो एजेंसी है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, वो जो कमिश्नर है वो सोए हुए है, उनके पास लाखों कंप्लेंट। उनका काम है कि इनको पनिश करना, इनको अगर कोई गलत किया है तो इनको सही रास्ते पर लाना, लेकिन वो नहीं कर रहे। इसका मतलब सारी सिस्टम बहुत ही गंदी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और ये अकेली नहीं, ये तो समझ में आया, समझो कि सामने आ गया मामला, लेकिन ऐसे कितने लोग? शेखर दत्त, what do you make of this? You know, it was in September last year that she was sacked from the IAS. And now in this belated time, after she has got anticipatory bail, after she has had 9 months of protection from arrest, finally that offending certificate is cancelled. Non-creamy layer OBC certificate, which was obviously completely not true, that has been cancelled. Are you impressed by this? Or do you think it's just another step in the system protecting her? Sir, I feel it's about legal precedents. Whatever we might be witnessing, whatever comes out of all this,
in favor of Puja Khedkar or against Puja Khedkar, we will be witnessing a lot of legal precedents. So I think court should be aware of such developments, whatever happens, because such a thing has never happened. And maybe there might be students earlier, candidates earlier, who might have gotten into the system using fake certificates. And what has been the legal precedent? Nobody really knows. And then cancelling of OBC NCL certificate, and then questioning that cancellation. Everything is going to have a lot of legal precedents, and they might be helpful for future, maybe let's say activists, to bring forth such systemic discrepancies. So my entire focus, faith is primarily based on what will come out of this from courts. How will courts see this? So legal precedents are set. I wonder what legal precedents are set when somebody has been protected from arrest for 9 months, given anticipatory bail. Court has said she is not a mafia don, so why are you going after her? The police has not even called her. Nothing has happened to her. No property has been confiscated. She has not lost monetarily anything. It is incredible. So I'm wondering what precedent is actually set, though I share your sentiment. Ritik is a young UPSC aspirant. Ritik, how does all of this make you feel as someone who wants to join the administrative services of the country? How does it make you feel to see Puja Khedkar walking around freely, system not taking any real action against her, while people like you have to do an honest effort to get into the IAS or other services? Right. Actually, it has brought shock and disgrace in equal measure to the whole civil services community, right? And it is a question mark on the credibility of the commission body as well, the topmost commission, constitutional body, that how it has allowed to happen. And secondly, I would like to say that when those entrusted with leading the nation start their journey with start the journey with lies, what future are we building? So I think it is completely the selection process is, I think, lack of proper verification mechanism by the institution. There is a question on the transparency, and the whole system is on trial after the Puja Khedkar case. And for the aspirants as well, it is a cautionary tale for the aspirants who has been attempting for the UPSC, so that they could refrain doing such, manipulating the system and submitting the fake documents, because we never know that who else are there apart from Puja Khedkar who are, who have been in the service or who have been trying to get into the service with such false documents and all. So I think the revamping and restructuring the whole examination process is also required at the same time. विजय जी, ऐसा लगता है कि एक पीसमील तरीके से कुछ बदल रहा है एडमिशन सिस्टम में. आप मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइज ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूजा ने उसको भी वायलेट किया था. कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर वायलेट किया था. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके वायलेशन हुआ था. कुछ और डिटेल्स को लेकर डिसऑनेस्टी था सिस्टम में. ऐसा लगता है, जैसे आपने बताया विजय जी, दैट मेनी पीपल आर प्रोटेक्टिंग हर, एंड द रीजन व्हाई शी इज स्टिल फ्री इज बिकॉज अगर ये जेल जाती है तो बहुत लोगों को जेल जाना पड़ेगा. जेल जाना पड़ेगा. ये बात बिल्कुल सही है. ये इसलिए इसको नहीं पकड़ते, और अगर ये जेल गई तो बहुत सारे लोगों को जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेले नहीं है. सिस्टम ने पूरा इसको अनदेखा किया है. इसके सारे क्राइम को उन्होंने अनदेखा किया है. और एक क्राइम मैं टीवी पर बोल रहा हूँ. देखिए, हमारे हर चीज पर ना ये टुकड़ों में देखने की आदत लग गई है. ये बोलेगा ये मेरी जिम्मेदारी, वो बोलेगा ये जिम्मेदारी नहीं. कोर्ट बोलेगा सर्टिफिकेट वैलिड है, सर्टिफिकेट असली है, लेकिन जिस तरीके से सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किया है उस पर कोई नहीं देखेगा. ये कब खत्म होगा? ये कोर्ट में मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ होगा. सर्टिफिकेट सही है, लेकिन जिस तरीके से वो लिए उसके लिए जो फ्रॉड किया है वो कब आएगा. और जब तक देखिए, इसमें से सबसे पहली जो विकेट हो गई वो सोनी साहब की. उनको यहां से नहीं जाना चाहिए था. जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिनके कार्यकाल में हुआ, वो अभी कहाँ है? उनको कौन पूछेगा कि क्या हुआ है? हम किसी को कुछ नहीं, वो एम्स को हम कुछ नहीं कर सकते, यूपीएससी को कुछ नहीं कर सकते. ये आसानी से नहीं हुआ है. ये सिस्टम, अगर ये सारा फ्रॉड विजय कुमार के ध्यान में आता है, आपके ध्यान में आता है,
तो एजेंसी के ध्यान में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये ध्यान ना देने की एक कुछ ना कुछ उसके कीमत होती है, वो शायद मॉनिटरी हो या और किसी से हो, उसकी वजह से उसको और ये अकेली नहीं है। अभी मैं कल परसों और एक मामला सामने रहा हूं, यहाँ तक कि ऑर्फन सर्टिफिकेट्स का मिसयूज किया गया है। लोगों ने बताया कि मेरे माँ बाप मत गुजर चुके और इसमें कंप्लेंट्स हो गई है, लेकिन कोई नहीं दिखता। कोर्ट में चले गए लोग, लेकिन कोई नहीं दिखता। कब तक हम सिर्फ सर पटकते रहेंगे? जब तक इसकी मानसिकता नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं होला। ठीक है, हम अपने तरीके से विरोध करते रहेंगे, बातें उजागर करेंगे, लेकिन जब तक ये सारी सिस्टम एक है और सारी जनता या यूपीएससी के स्टूडेंट्स और स्टेट एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स एक नहीं होते, तब तक इसमें बदलाव होना मुझे मुश्किल लगता है। कोड को शायद लोग बोलते हैं कि कोड से कुछ अच्छा आएगा, मुझे थोड़ा उसमें भी डाउट है, क्योंकि वो भी फाइनल सर्टिफिकेट देखते हैं। तो it is very troubling. Shekhar Dutt, have students lost faith a little bit in the UPSC? See, ultimately one can lose faith, but one doesn't have a choice. UPSC तो करना ही है, IAS में तो जाना ही है, administrative services में घुसना ही है. You don't, whoever wants to join the civil services, they don't have the option or the luxury of saying, अरे मेरा पूजा खेडकर वाला स्टोरी देखकर I have been dissuaded from following my career dream. They still have to go through the UPSC, but I am sure their faith has been shaken when they see this. I think on a lighter note, rather the incentive to crack the exam has increased because as maybe somebody said on a lighter note, that now they want to graduate from public to a public servant so that the system does not touch you. And वो इसलिए मुझे लगा इंसेंटिव बढ़ गया है सबका कि dark humor is always welcome, sir. Dark humor is always welcome in these troubled times. Yes, go ahead. एंड एक किसी और ने से ट्विटर पे लिखा हुआ था कि अगर आज किसी और केस में था, लेकिन यहाँ पे कोर्ट हो सकता है कि अगर आज ये ट्रायल हो जाता और इनको सजा हो जाती तो मेरा पैसे से विश्वास उड़ जाता। तो इसीलिए तो आई थिंक मे बी कि बहुत ही सरी इट्स अ ग्रेव एंड अ डिफिकल्ट फाइट, and particularly like kudos to you again once again and to Vijay sir and who's been taking it up. And otherwise मेरे को सिर्फ वही लगता है कि whatever happens today will have a lot of repercussions later on. A lot of other people are in line, and then जो precedents set होंगे, whether we let things happen, whether we stop it, whether we create a system which starts improving from now on. कि systemic जो collusion होता है, collusion is very difficult to break. You scratch my back, I'll scratch yours. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो वो बहुत ही मुश्किल है, एंड पर्टिकुलरली इन अ पावरलेस पब्लिक सिचुएशन जहाँ पे पब्लिक बहुत डिवाइडेड भी रहती है, एंड इट बिकम्स रियली रियली टफ टू गेट टू समवन हु हैज अ लॉट ऑफ लेट्स से वेल्थ एंड देन पॉलिटिकल पावर। Ritik, last word I'll leave to you because you are the young aspirant here among us. How do you stay motivated? How do you keep your faith कि system is broken, but I will still take the UPSC exam and try to enter the services? What do you tell yourself? Civil services, I believe, demand modesty and discipline, right? And the challenges in the job, and the after post selection, the diversity, and the basic reason behind why you are preparing for civil services keep you motivated throughout. We believe that upholding integrity isn't just personal, right? It is essential to the preserve the credibility of the entire system. So I think we are taught, we do have a paper of ethics, and we are completely in the whole examination process we stay motivated by seeing the diversity after the selection process. So this is how we actually frame ourselves. I take my hat off to you. I say salam to all of you UPSC aspirants, because Shekhar ji has seen me. The last 1 year we've been covering this non-stop, and people have been asking me, why Shiv, why are you so obsessed with this story? It is not a question of obsession. I see this as a stain on our country, and I see this as a roadblock to young Indians. And I put myself in the shoes of someone like a Ritik and other UPSC aspirants and saying, if someone can manipulate this system so hard, what will honest young Indians actually do for something as crucial as the administrative services?
So thank you, Shekhar Dutt, also for joining Yes, sir. me, and a very, Sir, very just- big, I just very, very want big to- thank you. Yes, Shekhar ji, you want to say something? जैसे वही था कि अगर if one person can really shake your belief, another one can I think can restore it. I too. hope so. I think I hope so. And I wish Vijay Kumbarji also very well. He's doing brave work, thankless work in many ways, and we will continue to highlight it here on NDTV. Thank you very much to all of you for joining me on this story.